So our next question, climate change is a reality. Explain with suitable example. So यहाँ पर आपको बोलना है कि क्लाइमेट चेंज जो है एक रियलिटी है एंड एक्सप्लेन करना है, आपको सूटेबल एग्जांपल देना है। तो यहाँ पर देखिए थोड़ा सा आप एग्जांपल दे सकते हैं अच्छे से। प्रेजेंट के लिए हम देख रहे हैं बहुत सारा जो एनवायरमेंटल मीटिंग हुआ है उसका भी आप दे सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए द यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज UNFCCC ट्रिपल सी UNFCCC defines defines it is a change of climate that is attributed directly or indirectly to human activity. So it is a change of climate that is attributed directly or indirectly to human activity, altering the composition of the global atmosphere. So it is a change of climate that is attributed directly or indirectly to human activity, altering the composition of the global atmosphere. So human activity includes the pollution that arises from industrial activity and other sources that produce greenhouse gases. तो ह्यूमन एक्टिविटी जहाँ पर इंक्लूड्स क्या कहाँ यहाँ पर क्या क्या है, इंक्लूड्स जहाँ पर द पॉल्यूशन दैट अराइजेस फ्रॉम इंडस्ट्रियल एक्टिविटी, पॉल्यूशन होता है इंडस्ट्रियल एक्टिविटी से, एंड अदर सोर्सेज दैट रिड्यूस ग्रीन हाउस गैस को रिड्यूस करते हैं, reduce net, so it's produce greenhouse gases like industrial activity and other sources. It increases greenhouse gases. These gases such as carbon dioxide have the ability to absorb the spectrum of infrared light. So these gases such as carbon dioxide have the ability to absorb the spectrum infrared, to absorb the spectrum of infrared light and contribute to the warming of our atmosphere. तो कंट्रीब्यूट क्या करते हैं ना, वार्मिंग करते हैं एटमोसफियर को। वंस प्रोड्यूस जब होते हैं, वंस प्रोड्यूस करते हैं, दिस गैसेस कैन रिमेन ट्रैप्ड इन द एटमोसफियर फॉर 10 or 100s of years. तो वंस जब प्रोड्यूस होते हैं तो दिस गैसेस कैन रिमेन ट्रैप्ड, मतलब ये एटमोसफियर के अंदर 10 से 100 ईयर्स तक वो यहाँ पर रहते हैं और इसको वो इन्वायरमेंट को नुकसान पहुँचाता है और क्लाइमेटिक चेंज घटाता है। तो यहाँ पर दिस द एविडेंस फॉर rapid climate change is compelling. Like global temperature rise होता है, the planet's average surface temperature has been risen about 2.0 degrees Fahrenheit, 1.1 degrees Celsius since the late 19th century. A change driven largely by increased carbon dioxide and other human-made emissions into the atmosphere. तो यहाँ पे the planet's average जो surface temperature has risen about 2.0 degree Fahrenheit, like लगभग 1.1 degree Celsius since the late 19th century. A change driven largely by increased, जहाँ पर कार्बन इंक्रीज होता है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर ह्यूमन मेड एमिशन भी इंक्रीज होता है इनटू द एटमोसफियर में जाते हैं। एग्जांपल नॉट ओनली वाज 2016 the warmest year of the on record। 2016 जो वर्ल्ड का मतलब अभी तक तो सबसे ज़्यादा गर्मी यार, and but 8 of the 12 months that make up the year, and from January through September with the exception of June where the warmest on records for those respective months. June month is the highest warmest month, and warming the oceans have absorbed much of this increased heat, with the top 700 meters, about 2,300 feet of ocean showing warming of 0.302 degrees Fahrenheit since 1969। एंड यहाँ पर देखिए ओशन का भी टेम्परेचर बढ़ गया है 0.2302 डिग्री फ़ारेनहाइट। सिंकिंग आइस शीट्स, यहाँ पर आइस शीट्स सिंकिंग आइस भी मतलब बर्फ़ भी गल जाते हैं, बर्फ़ का भी वो गलन होते हैं। एंड लाइक ग्रीनलैंड एंड अंटार्कटिका आइस शीट्स हैव डिक्रीज्ड इन मास, and data from NASA gravity recovery and climate experiment show Greenland lost 150 to 250 cubic meters। उन्होंने बोल रहा है, नासा का जो साइंटिस्ट बोल रहा है कि 150 to 250 क्यूबिक किलोमीटर्स जो है हमने लॉस्ट कर लिया है, लॉस्ट हो गया है लैंड, एंड 30 to 60 cubic miles of ice sheets ice per year been between 2006 to 2002 and 2006, while Antarctica lost 152
cubic kilometers, 36 cubic miles rise between 2002 and 2005. Other examples of climate change are ocean acidification, declining Arctic sea ice, sea level rise होते हैं, एंड डिक्लाइनिंग होते हैं आर्कटिक सी आइस. तो यहाँ पर बोल रहा है ओशन एसिडिफिकेशन होते हैं 2002 से 2005, जहाँ पर बहुत ज़्यादा आइस का जो गलन हो रहा है, तो ये बहुत बड़ा बुरा इम्पैक्ट फैलेगा. तो बहुत सारा जो आइलैंड कंट्री है वो भी डूब जाएगा 2050 के अंदर. अंदर बहुत सारा कंट्री लाइक मालदीव्स एंड अदर सेचल्स, इस छोटे छोटे जो आइलैंड है, एंड इंडिया के कोस्टल एरिया में भी थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा. तो इसको हमें और गवर्नमेंट को सबको देखना होगा, अच्छे से इसको टैकल करना पड़ेगा. एंड सो थैंक यू एंड प्लीज़ सब्सक्राइब.